Hello बच्चों, let's discuss the question, and the question is write what do you know about chemoautotrophs, and the key concept for the question will be chemoautotrophs. It will be chemoautotrophs. We have two different meaningful words in this chemoautotroph. The first word is chemo and the second one is autotrophs. Chemo means something which is related to chemical reaction. It is related to chemical reactions, while the second word is autotroph. Autotroph means जो अपना खाना खुद बना सकते हैं. Okay, means to prepare food by self. Okay, सो कीमोऑटोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो केमिकल रिएक्शन की मदद से अपने खाने को खुद ही प्रिपेयर करते हैं. अब क्वेश्चन आता है केमिकल रिएक्शन की मदद से कैसे. केमिकल रिएक्शन तो होता ही है फूड प्रिपेयर कराने के लिए, बट द थिंग इज कि वो एनर्जी लेते हैं फ्रॉम द आउटर सोर्स ऑफ द रिएक्शन. बाहर उनके सेल से बाहर आउटसाइड एनवायरनमेंट में होने वाली केमिकल रिएक्शन से जो रिलीज हुई है एनर्जी, उस एनर्जी को वो कंज्यूम करते हैं एंड देन दे विल फॉर्म देयर फूड बाय देमसेल्फ. सो वी कैन राइट दैट chemoautotrophs are the organisms that obtain energy from the chemical reaction in the outside world. ये क्या करते हैं कि अपनी सरफेस के ऊपर ना ऑक्सीडेशन करते हैं ऑफ द इनऑर्गेनिक मटेरियल, और उस ऑक्सीडेशन से जो भी एनर्जी रिलीज होती है दे कंज्यूम दैट एंड ट्रांसफॉर्म इट इनटू द यूजफुल फंक्शनिंग in preparation of their food. So we can write that they convert inorganic substance into the organic substance and during that reaction whatever the energy is released they consume it and use this energy in their food making procedure. For example, we have a bacterial cell here. Okay, ये bacterial cell है हमारे पास में. It's a bacterial cell.
ये बैक्टीरिया क्या करेगा, अपने सरफेस के ऊपर इट विल फॉलो अ रिएक्शन, और रिएक्शन क्या होगी, लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ oxidation of ammonia. So we have ammonium ion, here we have ammonium ion. This ammonium ion is converted into nitrite ion. Okay, it is converted into nitrite ion. Okay, अब इस nitrite ion को ये further convert करेंगे nitrate के अंदर, it will convert into nitrate. So इस conversion के दौरान they will release some energy, there will be release of energy, this is energy. Okay, ये energy release करेंगे और इस energy को they will utilize, they will consume this energy and therefore utilize it in formation of the food. So they will form their food with the help of this energy. ये एनर्जी इनके पास में कंज्यूम हो जाएगी. Okay, this is all about the oxidation mechanism which they use to get the energy. Now we will discuss about the example of these kind of organism, mainly chemoautotrophism आपके बैक्टीरियाज ही फॉलो करते हैं, and the example of such bacterias are nitrifying bacteria such as Nitrobacter, such as Nitrobacter, such as Nitrosomonas, Nitrococcus, Nitrococcus, sulfur bacteria, etc. are the example of chemoautotrophs. This is all about the question. I hope the question is understood to you. All the very best.